दोस्तों, ये तो सुना सभी नहीं होगा कि गिरकर उठना और उठकर चलना, यह क्रम है संसार का। कर्मवीर को फर्क नहीं पड़ता किसी जीत या हार का। दोस्तों, जीवन में हार या जीत आती जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर तुम हार गए हो तो फिर तुम अपना कोशिश करना ही छोड़ दो और अपना जो काम है तुम्हारा उससे दूर हट जाओ, लक्ष्य को प्राप्त करने से दूर हट जाओ। आपको बस एक ही चीज़ करनी है, वो है कर्म। कर्म कर्म कर्म, बस कर्म करता रहना है। फल की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, किसी न किसी रूप में ये फल जरूर मिलेगा। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के मेरे डेली स्टडी शेड्यूल का एंड डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिल्ली IAS में। आज मेरी तैयारी का है डे 76 और जो मेरा टारगेट है UPSC उसको डे रह रहे हैं ओनली 293। दोस्तों, आपको याद होगा सफ़र मैंने 359 डेज से शुरू किया था और अभी बस 293 डेज रह रहे हैं। तो देखते हैं आज का मेरा शेड्यूल क्या होगा। Friends, as you can see, today is 7th of August and I have not uploaded my daily schedule since last some days. So I will try to bring consistency in this. So let us see my today's schedule. Friends, from 9 to 10 I will do my techniques learning. Whatever techniques required for study, I will do that. And these two study block, I will do retrieval 4 of GS2 international relation. And from 1 to 2 also I will do the same thing, international relation retrieval means it is a type of revision. Okay, so and from 2 to 5 during these 3 study block I will do retrieval 4 of GS3 security, external security and border security, okay, organized crime, these things. 5 to 6 I will take a break, and from 6 to 7 is my buffer time. If anything remaining during whole day I will do during this time, and from 7 to 8 I will do margin gain, research and development, these things. And later part of the day is reserved for my work. Actually I does some work, so it is reserved for that from 9 to 12. Okay, so this is my today's schedule. Let us see how much I will achieve in tomorrow's accountability report. Thanks for watching.